अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, हो गई रिकॉर्डिंग है ना, इसको मैं पॉज कर सकता हूँ। MOSFET. So we are starting MOSFET circuits. So we are starting with new type of circuit which is known as which is known as which is known as which is known as MOSFET circuits. So we are starting with MOSFET at DC. We are having one problem which is given by this. The NMOS and PMOS transistors are in the circuit. Transistors in the circuit with what I can say Kn dash Wn by Ln, aspect ratio of NMOS is equivalent to Kp dash into Wp by Lp this is given as 1 milliampere per volt. This is given as 1 milliampere per volt square. और क्या दिया हुआ है VTP. What else is given? VTP minus times of VTP equal to VTN is given as 1 volt.
The value of VTP and VTN is equivalent to 1 volt. So the circuit is given like this. This is 2.5 volt. Then we are having a PMOS. Then we are having this. Okay. Then we are having this is as gate terminal of 1, gate terminal of 2. The first transistor is PMOS. पहला जो transistor है, that transistor is given as PMOS transistor. What I can say, this transistor is a PMOS transistor. And second one is NMOS. Okay. Then what we can say, there is a connection here. You can say there is a connection. This is VI, and from we are taking output from this value is minus of 2.5 volt, and we are taking output from here. So I can say we are taking output from and this value is 10 kilo ohm.
So this is our circuit which is given by, है ना, this is like CMOS circuit आपको दिया है और आपको बोला है कि दो ट्रांजिस्टर है, this transistors are Q1 and Q2. So we are taking output across a 10 kilo ohm resistance. We are interested in output. What I can say, we are interested in output. We are interested in output what I should say, find V output for Vi is equivalent to 0 volt. Next is 2.5 volt. Next is minus of 2.5 volt. So I am interested in V output for the circuit for this 3 inputs. इन 3 input के लिए circuit का output कितना होगा ये value मुझे पता करना है. So let's start to analyze this. Let's say what I am saying, ये ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करेगा जरा उसको हम देख लेते हैं. Okay. Let's select Vi equal to 0. The first option, first we are going for Vi equal to 0. Vi का वैल्यू हमने कितना सिलेक्ट किया है, 0 सिलेक्ट किया है. तो जरा देखते हैं. There are two transistors. The one is NMOS and second one is PMOS. दोनों के लिए कंडीशन देख लेते हैं हम क्या कंडीशन बनती है. So what we can say, यहाँ लिख देता हूं मैं NMOS and second slide I can write PMOS. सबसे पहले कंडीशन चैनल ऑन होने की कंडीशन. NMOS के लिए VGS must be greater than VTH and PMOS के लिए VGS must be less than VTH. हम क्या चाहते हैं कि NMOS ऑन हो जाए और PMOS ऑन हो जाए तो उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं. तो हमारे पास NMOS और PMOS की कंडीशंस क्या है, तो कंडीशंस को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. चलो, VTH वो पोटेंशियल है जहां क्या बनता है, जहां चैनल फॉर्म होता है. तो वो पोटेंशियल कितना ले लिया हमने, दैट पोटेंशियल इज VTH. जरा देखते हैं कि चैनल भी फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है. हाउ टू डू दिस? सो वी कैन से द VG फॉर द सिस्टम इज गिवन एज 0, क्योंकि अगर मैंने इनपुट 0 लिया है तो वो यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी कितना होगा, 0. सो व्हाट आई कैन से, VG is equivalent to 0. And what is Vs? Vs is equivalent to minus 2.5. हम बात कर रहे हैं NMOS की, और NMOS में Vs कितना है, minus 2.5. So you can say VGS must be greater than or equal to VTH. तो VG का वैल्यू आया 0, Vs का वैल्यू आया minus 2.5
एंड दिस इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट। तो पहला तो एनमॉस तो ऑन है ना, एनमॉस इज ऑन। और आपको पता है कि एनमॉस जब भी ऑन होगा, दिस कैन इंटर इनटू द टू रीजन्स। कहाँ कहाँ इंटर कर सकता है एनमॉस ऑन होने के बाद? कि ये कम से कम ट्रायोड में नहीं है। अब ट्रायोड में नहीं है तो कहाँ कहाँ जा सकता है? सो अवर आंसर टू दिस इज it can go into the saturation region और ट्रायोड रीजन, है ना, कट ऑफ में नहीं है ये। तो ये दो रीजन में इंटर कर सकता है, या तो सेचुरेशन में जा सकता है या ट्रायोड में जा सकता है। What else I can say? Else I can say, let's talk for the PMOS transistor। क्या बोलूंगा मैं PMOS ट्रांजिस्टर के लिए? The value of VG is still 0 because gate is connected, but value of VS is equivalent to 2.5। तो मैं क्या लिख सकता हूं? The value of VGS for the circuit is equivalent to 0 minus 2.5, which is equivalent to minus of 2.5। और अगर इसका वैल्यू माइनस 2.5 हुआ तो अगेन I can apply the condition। What is the condition? And condition is this, that VGS should be less than or equal to VTHP। VGS का वैल्यू कितना है? माइनस 2.5 इज लेस देन इक्वल टू -1। तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर दिस कंडीशन NMOS and PMOS both are on। So what I can say, for this condition NMOS और PMOS दोनों कैसे हैं? ऑन है। और दोनों ऑन है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अवर ट्रांजिस्टर कैन इंटर इनटू द टू रीजन। किस किस में जा सकता है? सेचुरेशन में जा सकता है और इट कैन इंटर इनटू द ट्रायोड रीजन। दो रीजन में जा सकता है। तो देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? कि वी आर हैविंग एनमॉस एंड वी आर हैविंग वन पीमॉस। एक एनमॉस है, एक पीमॉस है। और क्या कंडीशन है कि या तो एनमॉस सेचुरेशन में जा सकता है, पीमॉस भी सेचुरेशन में जा सकता है, या फिर एनमॉस सेचुरेशन में जा सकता है, पीमॉस ट्रायोड में रह जाएगा, है ना। यू कैन हैव 4 पॉसिबिलिटीज। या फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी इज एनमॉस ट्रायोड में जा सकता है। पीमॉस कहाँ जाएगा? पीमॉस कैन इंटर इनटू द सैचुरेशन। और फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि दोनों कहाँ हो? ट्रायोड में हो। और ये भी कहाँ हो? सो दिस आर ऑल पॉसिबिलिटीज। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो दिस इज द टेबल कि एनमॉस और पीमॉस इतने रीजन में इंटर कर सकते हैं, इतने रीजन में क्या कर सकते हैं? इंटर कर सकते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि व्हाट विल वर्क फॉर दिस। चलो देखते हैं आगे। Let me draw the circuit again so that I can this is 2.5 volt
इनपुट इज कनेक्टेड टू 0। तो ये मेरे पास दिस इज द स्टोरी फॉर द सर्किट, ये इतनी कहानी है सर्किट की, और बाकी सारे पैरामीटर हमें दिए हैं, तो वी कैन राइट ऑल द पैरामीटर्स एंड लेट्स कैलकुलेट। मैं इसका एनालिसिस बताता हूं आपको कि हाउ वी कैन एनालाइज द सर्किट व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स। एक से ज्यादा आपके पास ट्रांजिस्टर है, और ऊपर वाला सर्किट कौन सा है? यू कैन से दिस वन इज PMOS, और ये वाला कौन सा है? NMOS, है ना। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बबल भी मिल जाएगा, बट ओके यू कैन टेक बबल, और कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नाउ चलो, और यहाँ क्या कनेक्टेड था? यू कैन से हियर वी हैव वन रेजिस्टेंस, this resistance is having value 10K। चलो मैं पहला assumption लेता हूं, एंड पहला assumption is what? पहला assumption is both the transistor NMOS and PMOS both are in NMOS और PMOS दोनों कहाँ चले जाएं? दोनों चले जाएं सेचुरेशन रीजन में, कि भाई NMOS भी सेचुरेशन में है और PMOS भी सेचुरेशन में, तब क्या कहानी बनाई जाए? जरा उस कहानी को हम देखते हैं कि वी आर हैविंग NMOS एंड PMOS बोथ आर इन सेचुरेशन। क्या कंडीशन होती है? द कंडीशंस आर, चैनल तो ऑन है और सेचुरेशन में है, तो NMOS सेचुरेशन की कहानी ये है, VDS should be greater than or equal to VGS minus of VTH, and can I say the story for PMOS in saturation? PMOS अगर सेचुरेशन में होगा तो क्या कहानी होगी? VDS should be less than or equal to VGS minus of VTH. Now we can see from here कि how this circuit will work. So what is value of VD? तो आप बोलोगे VD is what? VD for both is V output. So I can say let's find the condition. VD is V output minus VS. ये किसके लिए है? This is for NMOS circuit. कंडीशन चेक कर लेते हैं हम। V आउटपुट VS कितना है? NMOS के लिए VS इज माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा प्लस 2.5। VD minus VS should be greater than VG. VG is 0 minus VS. VS is 2.5 minus VTH. 2.5 कैंसिल, तो अगर V आउटपुट का वैल्यू -1 से बड़ा या उसके बराबर होगा तो वी कैन से योर NMOS इज इन सेचुरेशन रीजन। चलो PMOS की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द PMOS सर्किट। सो व्हाट आई कैन से, VD is V output minus VS. VS is what? 2.5. This should be less than or equal to VG. VG is 0 minus 2.5 minus 1, है ना। VTH P है ये ना, this is threshold voltage of PMOS. minus 2.5 minus 2.5 cancel, so what I can say, V output is less than or equal to -1। कि अगर V आउटपुट का वैल्यू
not -1, it's a +1 because we are having 2 minus. So what is our analysis says? Our analysis says that V output is less than 1, then PMOS in saturation, and V output is greater than -1, then NMOS in saturation. So what I can say, if I draw a scale and find common area between them, so you will say V output less than 1. V output का value less than 1. Let's say this is the value for V output less than or equal to 1. And this is the value where V input is greater than -1. So what I can say, the first one is condition. ये वो कंडीशन है जो किसको सैचुरेशन में रखेगी? This will keep NMOS in saturation. And this is the condition which keeps PMOS in saturation. So can I say what is intersection of these two? So you can say this region is known as intersecting area. And this area is what? What I can say, if V output lies between these two range, it is greater than or equal to -1 or less than or equal to 1. This is for this condition. अगर V output का वैल्यू -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू आती है, तो मैं बोल सकता हूं कि my transistor is working in what? My transistor is working in saturation region. दोनों ट्रांजिस्टर saturation में वर्क करेंगे. Both the transistor will work in saturation. Both the transistor will work in both the transistor will work in saturation. So this is the idea. If V output is greater than -1 and less than 1, तब दोनों ट्रांजिस्टर आपके कहाँ काम करेंगे? Both the transistor will work in saturation. जरा हम देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है. Now what I can say, I have two transistors. नया काम मिल गया तो नया काम का गवर्नमेंट Now what I can say, okay, so let's start. Can I say I can satisfy a KVL here? यहाँ मैं KVL को satisfy कर सकता हूँ कि if PMOS is in saturation,
अगर PMOS मेरा saturation region में है तो क्या बोल सकता हूं मैं? If PMOS is in saturation, then this current, which current? This current. This current, let's say this is IDP, is divided into the two parts. This current is IDN. और यहां जाने वाला करंट कितना होगा? This current is load current. So I can apply the KCL at drain point. I can apply KCL at drain, or better to say at V output. V output पे KCL लगा दिया, तो क्या लगाया कि IDP जो करंट है, this IDP current is divided into the two parts. एक बनेगा IDN और एक बनेगा IL. And can I say IDP is equivalent to IDN plus IL. IL कितना हो जाएगा? This is V output divided by 10. Now I am interested in the value of IDP and IDL. इनका वैल्यू देखने में हम इंटरेस्टेड है कि IDP और IDL का वैल्यू कितना होगा. So I can calculate the value of IDP. The value of IDP is equivalent to is equivalent to 1/2 Kp dash into Wp by Lp. You know what Kp dash is? Kp dash is mu n into Cox into VGS minus of VTH P whole square. चलो IDP का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. So I can say IDP is equivalent to it is 1/2 and this value is given as 1 milliampere. तो IDP भी मिली एम्पियर में ले लेते हैं, तो यहाँ 1 मिली लिखने का कोई जरूरत नहीं. VG का वैल्यू कितना था? 0 माइनस VS का वैल्यू कितना था? VS फॉर P टाइप इज प्लस 2.5, तो ये आ गया माइनस ऑफ 2.5 माइनस VTP का वैल्यू कितना है? दिस वैल्यू इज इक्वलेंट टू 1 स्क्वायर. So you can say the value of IDP is equivalent to 1.5 whole square divided by 2, which is 2.25 divided by 2, which is equivalent to 1.125 milliampere. तो मेरे पास किसका वैल्यू आया? I have the value of DP. P का वैल्यू मेरे पास आ चुका है कि IDP का वैल्यू कितना होगा, तो IDP का वैल्यू इज अवेलेबल टू अस. नाउ I am interested in IDN, है ना. तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ कैलकुलेशन, है ना. दिस कैलकुलेशन इज व्हाट? फॉर IDP. Now I am interested in calculating IDN. So you can say IDN is equivalent to 1/2 Kn dash Wn by Ln into VGS minus VTHN whole square. Now what I can say? I can say that
this is 1 by 2. The value of Kn dash into Wn by Ln is equivalent to 1, and what I can say, Vg is what? 0 minus 2.5. You can check कि Vs का वैल्यू कितना है, तो आप देख सकते हैं Vs का वैल्यू है माइनस ऑफ 2.5. दिस इज वैल्यू ऑफ Vs which is given as minus 2.5. And minus 1 VTHP का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है? minus 1. So this is again 1.5 whole square by 2, which is equivalent to 1.125 milliampere. Now what I can say, and this is value of IDN. So now IDN and IDP both are available to us. We can put the value in this. So you can say अप्लाइंग KCL कि भाई IDP से जितना भी करंट आया है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. सो द रिजल्ट ऑफ KCL विल बी दिस, दैट IDP is equivalent to IDN plus V out by 10K, or I can say 1.125 is equivalent to 1.125 plus V output divided by 10K. These two terms are cancelled, so we can say V output equal to 0. So V output equal to 0. लेकिन क्या V output equal to 0 will keep this transistor in the saturation? ये तो वो आंसर है ना जब हमने NMOS को भी saturation में लिया, PMOS को भी saturation में लिया. अभी हमें पता नहीं exact answer. Yes, because what was the condition? You can say the condition was this, that V output should lie -1 to +1, और -1 और +1 के बीच में ही 0 आता है. So you can say what is your biasing point? You can say here we can say the output lies here, यहां लाई करता है, और ये 0 है, और 0 है इसका मतलब जो हमने assumption लिया था वो करेक्ट है. और अगर ऐसा नहीं होता, if this is not so, we have to analyze it once again. हमको क्या करना पड़ता, फिर एक को saturation में रखना पड़ता, दूसरे को कट ऑफ में रखना पड़ता और सारे कैलकुलेशन करना पड़ते. So I think there is no problem in this analysis. बड़ा ही आसान था, और मैंने पूरा एनालिसिस हर एक स्टेप बताया है आपको, so that आपको कंफ्यूजन ना हो, आप एनालिसिस सीख जाएं इसका. So this is our first question on when NMOS and PMOS both are working in the circuit. Okay, so okay. Okay. Next is let's take one more example, and
This is a question based on MOSFET. This is our circuit. Now I am taking input क्योंकि हमको 3 इनपुट के लिए आउटपुट निकालना था, and I am taking now input is at 2.5 volt. अब मैंने इनपुट का वैल्यू कितना लिया है 2.5 volt. और what is the value of resistance? You can say the value of resistance is 10k. This resistance is ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 10k है, एंड फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज PMOS and second transistor is NMOS. So this is our total circuit, and we are interested in the output voltage for this circuit. इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? So we are interested in this. So what we can say? Okay. So let's start with this problem, how to analyze this. We are having VI equal to 2.5 volt and Kp prime into Wp by Lp equal to Kn prime Wn by Ln is equivalent to 1 milliampere per volt square. And what else is given? We can say the else is Vtn equal to minus times of Vtp is equivalent to 1 volt.
This is given. So let's start how this will work. So we are having again the analysis procedure of analysis is same. We are having two transistor. The one transistor is PMOS and second one is NMOS. So this is PMOS and second one is NMOS. देख लेते हैं कोई ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है या नहीं है. चलो VGS should be less than or equal to VTP. VG का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे सर VG is equivalent to 2.5 which is given here minus VS. What is value of VS in case of PMOS? It's a 2.5. This value is less than -1. या इसका मतलब ये हुआ कि 0 इज, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती. ये तो -1 को बड़ा बता रहा है 0 से. ऐसा होता है क्या? नो. है ना. सो व्हाट आई कैन से PMOS इज नॉट वर्किंग मीन्स PMOS इज इन कट ऑफ. ये कहाँ है? ये तो कट ऑफ में चला गया. ठीक है. अब NMOS पे आ जाते हैं. व्हाट इज कंडीशन फॉर NMOS? VGS should be greater than VTN. VG का वैल्यू कितना है? 2.5 वोल्ट. VS का वैल्यू कितना है? -2.5 वोल्ट. दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 वोल्ट. ये करेक्ट है क्या? यस, दिस इज करेक्ट. और अगर ये करेक्ट है तो मैं ये बोल सकता हूं कि यस, चैनल फॉर्म हुआ है. NMOS इज नॉट इन सैचुरेशन. ये करेक्ट है. इसका मतलब क्या बोल सकता हूं कि चैनल तो फॉर्म हुआ है. एंड अब चैनल फॉर्म होने के बाद ट्रांजिस्टर दो रीजन में जा सकता है. कहां कहां? या तो जा सकता है वो सैचुरेशन में, या जा सकता है वो ट्रायोड में. और सैचुरेशन में जाने के लिए क्या कहानी है? VDS मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VTH. एंड ट्रायोड में जाने के लिए क्या कहानी है कि VDS मस्ट बी लेस देन VGS माइनस ऑफ VTH. ये बोलूं या VTN बोलूं या TP बोलूं, जो भी बोलूं, VTN बोलूं, जो भी बोलूं करेक्ट है. नाउ चलो देख लेते हैं कि किस रीजन में है. सो यू कैन से VD minus VS should be greater than or equal to VG minus VS minus VTH का वैल्यू कितना है? 1. VS एंड VS कैंसल. VD का वैल्यू कितना है? V आउटपुट should be greater than or equal to VG का वैल्यू कितना है? 2.5 minus 1 is 1.5. अगर मेरे पास V आउटपुट का वैल्यू 1.5 से बड़ा आता है तो व्हाट आई शुड से कि NMOS इज इन NMOS. मेरा किस रीजन में होगा? आई कैन से NMOS विल बी इन सैचुरेशन रीजन. NMOS कौन सा रीजन में होगा? NMOS होगा मेरा सैचुरेशन रीजन में. और वहीं V आउटपुट का वैल्यू अगर लेस देन 1.5 आ जाए, क्योंकि चैनल तो पहले ही फॉर्म हो चुका था, तो ये होगा किस रीजन में? यू कैन से दिस विल स्टे इन ट्रायोड रीजन. है ना. तो ये दो कहानी बन सकती है. नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और करते हैं कि PMOS ट्रांजिस्टर कैसा हो गया है. व्हाट आई कैन से द PMOS ट्रांजिस्टर इज नॉट इज इन कट ऑफ. और PMOS अगर कट ऑफ में बना तो आई कैन ड्रॉ माई सर्किट अगेन.
जो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है आई कैन रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट. सो यू कैन से transistor is only remaining transistor is NMOS. अब जो बचा हुआ ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है? NMOS है. और NMOS से क्या कनेक्टेड है? आप NMOS को ध्यान से देखेंगे तो एक कनेक्टेड है 10 किलो ओम रेजिस्टेंस. This is V output and one this is minus of 2.5 volt. This is minus of 2.5 volt and this is 2.5 volt. This is available to the NMOS. अब इसकी भी कंडीशन हमको पता है कि this value is these are two conditions. These are two conditions. ये दो कंडीशंस है कि भाई सैचुरेशन में होगा या ट्रायोड में होगा, उसके लिए दो कंडीशंस है हमारे पास कि कैसे वर्क करेगा. सो व्हाट आई कैन से, आई कैन अप्लाई माय बेसिक फार्मूला एंड व्हाट फार्मूला सेज दैट IDN is equivalent to 1/2 into 1 into VGS, which is VG is 2.5 minus 2.5 VGS minus VT whole square. तो यहां से क्या आया? The value of IDS must be equal to 5 minus 16. This is 5 minus 1, which is 4. 4 square is 16 divided by 2. तो ये वैल्यू आया 8 मिली एम्पियर. और मैं क्या बोल सकता हूं कि देखो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है. तो ओनली पॉसिबल डायरेक्शन फॉर करंट इन द मॉसफेट इज दिस. अलाउड डायरेक्शन फॉर करंट इन द मॉसफेट, वो केवल किस डायरेक्शन में हो सकता है कि अगर ये सैचुरेशन में या ट्रायोड में है तो करंट की डायरेक्शन इस एरो की डायरेक्शन में हो सकती है और केवल एक ही करंट होगा. और 8 मिली एम्पियर यहां से जाएगा तो व्हाट आई कैन से, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, और ये कितना हो जाएगा 80. ये 0 पे है तो ये कितने पे होगा? V आउटपुट इक्वल टू माइनस 80 वोल्ट आया. लेकिन आपकी कहानी क्या बोलती है कि भाई अगर ये ट्रांजिस्टर, हमने सैचुरेशन का कैलकुलेशन किया ना, तो सैचुरेशन में वैल्यू कितना आ रहा था? 1.5 वोल्ट से ज्यादा. लेकिन हमारे पास तो माइनस 80 आया. अगर माइनस 80 आया तो हमने तो कुछ गड़बड़ कर दिया इसको. मीन्स दिस ट्रांजिस्टर इज नॉट इन सैचुरेशन रीजन. ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में नहीं है? हम बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर इज नॉट इन सैचुरेशन. अब सैचुरेशन में नहीं है तो एक ही कैलकुलेशन बनता है कि वो कहाँ होगा? कट ऑफ में होगा, सॉरी ट्रायोड में होगा. तो लेट्स कैलकुलेट इट फॉर ट्रायोड रीजन. सो वी विल कैलकुलेट इट फॉर ट्रायोड. तो क्या आएगा? IDS is equivalent to Kn into Wn by Ln into VGS minus VTH into VDS minus
VDS square divided by 2. This is the idea. So I can say IDS for the circuit is equivalent to 1 milliampere per volt square into, we can say, what is value of VG? VG is 2.5 minus VS 5. 5 minus 1 is 4. 4 times of VDS. What is VD? VD is V output minus V output minus VS. VS is 2.5. तो ये हो जाएगा plus 2.5 minus. Okay, we can make equation in VDS only. क्यों जाना है इधर? Can I say IDS is equivalent to, ये इसी डायरेक्शन का करंट है क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, so you can say IDS is equivalent to minus V output divided by 10K. I can write this is IDS is equivalent to 1 into 5 minus 1. 5 minus 1 is 4. So this is 4 times of VDS minus VDS square by 2. है ना? And can I have the value of IDS? The value of IDS is given by zero. V output ही VD है, so you can say 0 minus IDS is nothing but minus of V output divided by 10K. चलो कैलकुलेशन तो सॉल्व करना ही पड़ेगी, नो इशू हियर. तो एक ही V आउटपुट का ही एक इक्वेशन बना लेते हैं. सो व्हाट आई कैन से, दिस इज माइनस ऑफ V आउटपुट डिवाइडेड बाय 10K. और K तो हटा ही दो बिकॉज सामने वाला करंट भी मिली एम्प में ही है. इज इक्वलेंट टू 4 times of V output plus minus 2.5 VGS which is plus 2.5 minus 1 minus VD which is V output minus VS which is plus 2.5 whole square divided by 2. ऐसा कुछ बनेगा. एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V आउटपुट. और V आउटपुट का वैल्यू कितना आएगा? द वैल्यू ऑफ V आउटपुट इज इक्वल टू, by solving this equation what I can say, the value of V output, there will be two values of V output. एक वैल्यू आया 0.244. The value of V output, the valid value of V output is equivalent to what I can say, minus 2.44.
or what I can say, the value of IDN is equivalent to point, yeah, this is divided by 10, so 0.244. और यहाँ quadratic equation से दो value मिलेगी, but one you can neglect because this should satisfy your condition that V output should be less than -1.5. So -1.5 से -2.44 ही कम है. So this is how we can analyze CMOS circuit when Vi equal to minus of 2.5. अगला देखते हैं. What is next here? What I can say, the next is given as let's say -2.5 volt, -2.5 volt, and these two are connected, and input is not now is -2.5 volt. You can say what is input now? Input is -2.5 volt. This is PMOS, this is NMOS, and one resistance of 10K, and this I can say this is V output. Again, let's see which transistor is working here. यहाँ कौन सा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, तो जरा इसको देखते हैं. Which transistor will work in this system? So again, the repetition of same old process. We are having PMOS here, NMOS here. Wait for a moment.
So we are finding the output of a CMOS complementary pair. Then input is Vi equal to minus 2.5 volt. Yeah. So what I can say that we can say that the P है ना, सबसे पहले चैनल फॉर्मेशन की कंडीशन निकाल लेते हैं हम. What is the condition for channel formation? क्या कंडीशंस हैं चैनल फॉर्मेशन के लिए? That VGS should be less than VTP. VG का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ 2.5 वोल्ट. VS का वैल्यू कितना है? 2.5 वोल्ट. This should be लेस देन -1. ये तो करेक्ट है. मीन्स PMOS कैसा है? चैनल तो बन गया है, और चैनल बन गया है तो व्हाट आई कैन से, दिस कैन एंटर इनटू द टू स्टेट्स. या तो ये जा सकता है सैचुरेशन रीजन में, या कहा जा सकता है, दिस कैन एंटर इनटू द या जा सकता है ट्रायोड रीजन में. एंड व्हाट अबाउट दिस? The condition here is VGS should be greater than or equal to VTH. एंड VG का वैल्यू कितना? माइनस 2.5 वोल्ट. VS का वैल्यू कितना? माइनस 2.5 वोल्ट. तो ये हो जाएगा प्लस 2.5 वोल्ट. दिस शुड बी ग्रेटर देन 1. ये ग्रेटर देन 1 है क्या? तो व्हाट इज माय कंक्लूजन हियर? दैट NMOS इज इन कट ऑफ. जो NMOS ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में है? NMOS ट्रांजिस्टर है मेरे पास कट ऑफ रीजन में. कि NMOS इज नॉट वर्किंग. मे बी PMOS में इंटर इनटू द सैचुरेशन और ट्रायोड, बट NMOS इज डेफिनेटली नॉट वर्किंग. तो ये मेरे पास इक्वेशन आई है. जरा आप देखते हैं कि NMOS अगर मेरे पास है ना, दिस इज NMOS, this is NMOS. NMOS कैसा है? ऑफ है. और NMOS ऑफ है तो व्हाट आई कैन से, तो माय न्यू सर्किट फॉर इज, है ना, मॉडिफाइड सर्किट. जो भी ऑफ है उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे? वी कैन से, अगर किसी भी एलिमेंट के क्रॉस करंट 0 होता है तो वी कैन रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट. सो यू कैन से वी हैव अ न्यू मॉडिफाइड सर्किट. We can have a new modified circuit which is this. Minus 2.5 volt. Then we are having this. Okay. Then we are having this is 2.5 volt, है ना. Then drain is connected to V out via the load. This is 10K. So this is our whole circuit. Now let's calculate the current for this circuit. इस circuit का current कितना होगा? So again, what is criteria if this transistor will work in saturation? उसका क्या criteria होगा? So you can say the criteria for the saturation is VDS for PMOS
should be less than or equal to VGS minus VTP। ठीक है, तो इसको कितना लिख दूं मैं? दिस इज VD minus VS should be less than VG minus VS और VTP कितना है? 1 वोल्ट है। ये कैंसल, ये कैंसल। VD should be less than or equal to VG, which is minus 2.5 minus 1.5। तो अगर ये 1.5 से छोटा हुआ तो दिस विल इंटर इनटू द सैचुरेशन, और अगर VD का वैल्यू 1.5 से बड़ा हुआ तो दिस विल इंटर इनटू द ट्रायोड रीजन। किस रीजन में इंटर करेगा? ये ट्रायोड रीजन में इंटर कर जाएगा। सो दिस इज द स्टोरी। नाउ व्हाट आई कैन से, what I can say, let's start. So we are interested in calculation for current, तो करते हैं कैलकुलेशन करंट का। कितना हो जाएगा? I can say the IDS is equivalent to 1/2 into 1 into VG minus VS plus 1। VGS हो गया VG minus VS minus VT, तो minus VT कितना होता है? माइनस माइनस 1 plus 1 होल स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन से, IDS का जो वैल्यू आया है मेरे पास 5 minus 1 16 आया है 8 मिली एम्पियर। और व्हाट आई कैन से, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? सो यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द मॉस इज दिस। ये डायरेक्शन होगा और आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा? 80 वोल्ट। लेकिन अगर मैंने सैचुरेशन का अगर लगाया है फॉर्मूला, कि सैचुरेशन के करंट का फॉर्मूला लगाया, तो फिर वोल्टेज भी कहाँ मिलना चाहिए? व्हाट आई शुड से, दिस मस्ट बी इन सैचुरेशन। लेकिन सैचुरेशन की कंडीशन तो ये है कि माइनस 1.5 से भी कम होना चाहिए, और यहाँ तो आया 80 है ना। 80 वोल्ट इज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। 2.5 सप्लाई में 80 कहाँ से लाओगे आप? सो अवर एनालिसिस इज नॉट करेक्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये दिस इज नॉट इन what should I say, this is not in saturation region. Transistor is not working in saturation। अगर ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में नहीं वर्क कर रहा है तो कहां वर्क कर रहा है? नाउ आई कैन से दिस ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन ट्रायोड रीजन। ये ट्रांजिस्टर कहां वर्क करेगा? ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा ट्रायोड रीजन में। सो व्हाट आई शुड से, दिस ट्रांजिस्टर विल वर्क इन ट्रायोड। और ट्रायोड के लिए क्या कहानी है? दैट IDS is equivalent to
Kp dash into Wp by Lp into Vgs minus Vtp into Vds minus Vds whole square by 2. ठीक है? So we can apply all the results, है ना? सारे रिजल्ट हमको पता है, तो what I can say that IDS is equivalent to 1. This whole factor is given as 1, है ना? This whole factor is given as 1. VG is minus 2.5 और ये तो -4, ये हमने पढ़ लिया था, into VDS. VD is V output minus VS is 2.5 minus V output minus 2.5 whole square divided by 2. And from this quadratic equation I can have the answer, है ना? IDS कितना होगा? From here I can write the IDS. IDS is equivalent to, है ना? एक बात ध्यान रखें कि IDS कौन सा करंट? You can say IDS is the current in this direction. ये वाला करंट IDS है, तो IDS का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस बार IDS का वैल्यू होगा V output divided by 10K. So V output is equivalent to V output equal to same result 2.44 and ID is equivalent to 0.244 milliampere. So this is the answer for the circuit, है ना? हमने इस पूरे सर्किट को एनालाइज किया. ये था एक कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज, है ना? और हमने देखा कि इसमें जब 0 दिया तो क्या इसका आउटपुट रहा. when इनपुट वोल्टेज इज 0 तो हमने सारे कंडीशन निकाले इसके. फिर दूसरा केस क्या देखा आपने? इन द सेकेंड केस व्हेन योर इनपुट इज 2.5, तो 2.5 इनपुट के लिए हमने पूरी कहानी देखी कि 2.5 इनपुट के लिए कहानी क्या बन सकती है इसकी, है ना? फिर हमने इसका थर्ड पार्ट देखा. एंड व्हाट इज थर्ड पार्ट? कि व्हेन इनपुट इज -2.5 तब इसकी कहानी क्या बनेगी. एंड दिस इज द होल आइडिया फॉर द क्वेश्चन कि हाउ वी कैन एनालाइज द क्वेश्चन व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल ट्रांजिस्टर इन द सर्किट. तो एक क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीमॉस के कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. नाउ लेट्स टेक सम प्रॉब्लम ऑन प्रीवियस ईयर गेट से कुछ प्रॉब्लम लेते हैं हम, है ना. लेट्स टेक सम प्रॉब्लम फ्रॉम प्रीवियस ईयर गेट. ग्रेट, प्रीवियस ईयर से कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और देखते हैं हाउ इट वर्क्स.
So let's take few problems from previous year GATE so that we can check our concept. So what I can say, this is the problem statement which I have. GATE 2007 का problem है. This is problem for GATE from GATE 2007. And what this problem is saying, we are having this is 5 volt. ठीक है. Then what else? This is connected to ground, है ना? Now what we can have? This is our PMOS transistor, है ना? PMOS transistor का एक और representation कैसा होता है? You can say you can have one more representation for PMOS transistor. This will looks like this. और यहाँ लगा देते हैं हम एक बबल. This bubble indicates the PMOS transistor. और जहाँ नहीं लगा वो कौन सा है? NMOS. Okay. Input is what? A 2.5 volt input is given. और क्या बोला है? This is ground. और ये लिखा भी है कि this is PMOS और this is NMOS. और क्या दिया है इसके लिए? Kn equal to Kn is equivalent to Kp is equivalent to mu n into Cox into W by L is equivalent to mu p into Cox into W by L. This all are equal and it is 40 microampere per volt square. ये दिया है. और क्या दिया है? VTH n equal to VTH p equal to 1. Okay. VTH n है ना कि VTH n का वैल्यू 1 है तो VTH p का वैल्यू -1 है. तो आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, कि यहाँ फ्लो होने वाला जो करंट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस करंट. द करंट I करंट I इन द सर्किट. इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा उसकी वैल्यू बताई है, आपको बताना है. एंड व्हाट एल्स इज गिवन? These points are given that for option which are given is 0, 25 microampere, 45 microampere
and 90 microampere. These are the answer for this question. तो एक बार सोचे कैसे ट्राई कर सकते हैं इसको. Then I will try. Okay, let's solve. What I can say कि लेट्स मैं मान लेता हूं कि पीमॉस और एनमॉस दोनों ही सेचुरेशन में है. तो और है ना, दोनों का करंट सेम होना चाहिए, और तो कोई है नहीं, क्योंकि जितना करंट यहां से आएगा नहीं करंट यहां जाएगा. सो आई कैन से आई डी पी इज इक्वलेंट टू 1/2. It's 40 microampere per volt square into Vg, which is 2.5 minus Vs, which is -5 minus Vth 1 whole square. तो IDP का वैल्यू कितना आया? It is 20 times of -2.5 plus 1. -2.5 plus 1 is 1.5. 1.5 square is 2.25. And this much of microampere. So I can say IDP is equivalent to 45 microampere. और इतना ही करंट अगर मुझे आईडीएन एनमॉस के सैचुरेशन से मिल जाता है तो फिर मुझे पता लग जाएगा. देखो, somehow what is the idea? The idea is the current of PMOS and NMOS, है ना. अगर मैं इसके करंट को बोलूं, let's say how we can analyze this transistor, कि अगर मैं इसके करंट को बोलूं IDP, let's say this current is IDP and this current is IDN. What I want, IDP is equivalent to IDN. This is my requirement. So what I can say, let's calculate the current for IDN. IDN के लिए calculate करते हैं current. So IDN, the N transistor drain current in NMOS transistor is equivalent to 1/2 into 40 into Vg, which is 2.5 minus Vs, which is 0 minus 1 whole square, and this is also 45 microampere. So which one is correct answer? ये दोनों का करंट सेम है, वही मोड ऑफ ऑपरेशन होगा. अरे देखो, अभी क्या देखा हमने कि एनमॉस के सैचुरेशन का और पीमॉस के सैचुरेशन का करंट अगर बराबर है तो दोनों सैचुरेशन में है. अगर एनमॉस के सैचुरेशन का करंट अगर 45 माइक्रो एम्पियर है और पीमॉस के ट्रायोड का करंट इतना होता तो मैं बोल देता एनमॉस सैचुरेशन में पीमॉस ट्रायोड में, क्योंकि ये दोनों करंट हमेशा कैसे होने चाहिए. व्हाट आई वांट दिस टू करंट टू बी एग्जैक्टली सेम. आईडीपी इज इक्वलेंट टू आईडीएन. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडीशन, है ना. इस कंडीशन की रिक्वायरमेंट है कि आईडीपी आईडीएन के इक्वल होना चाहिए. So okay, 45 microampere is correct answer. Now let's move to the next question, and this question says, what is problem statement for this question? The value of K, which is given as, again this is previous year gate, 1/2 mu into COX into W by L is equivalent to 0.1 milliampere
पर वोल्ट स्क्वायर। तो मेरे पास इसका वैल्यू तो दिया है। नाउ व्हाट आई कैन से, आगे मैं बोल सकता हूं कि VT का वैल्यू दिया है आपको, द वैल्यू ऑफ VT इज 2 वोल्ट। वैल्यू दिया है VT का 2 वोल्ट, है ना, एंड 2 volt for NMOS, and you can say mod of VT is equivalent to 2 volt. This is given. I am interested in ID in milliampere. ID का वैल्यू बताना है मुझे in milliampere, और ट्रांजिस्टर कैसा दिया है, you can say this is our transistor. Okay. -5 volt. This is 12 volt. This is 10K. This is 10K. This is PMOS. This is NMOS, है ना। तो ट्रांजिस्टर है, और क्या पूछा है आपसे कि दिस करंट इज ID। तो आपको ID की वैल्यू बताना है इन मिली एम्पियर, और क्या दिया है, थ्रेशोल्ड वोल्ट। अब देखो अगेन, ये जो दोनों ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन है किस मोड में काम करेगा। ये ट्रांजिस्टर किस मोड में काम करेगा जरा देखें, है ना। तो देखते हैं कि अगर एनमोस का सेचुरेशन का करंट पीमोस के ट्रायोड के करंट के इक्वल हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि एनमोस सेचुरेशन में है और पीमोस ट्रायोड में है। और अगर दोनों के सेचुरेशन का ही करंट अगर सेम हो जाए, दोनों के सेचुरेशन का ही करंट अगर सेम हो जाए, तो व्हाट आई कैन से, दोनों के सेचुरेशन का करंट अगर सेम हो जाएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा कि दोनों ही, क्योंकि व्हाट इज कंडीशन इन दिस टाइप ऑफ सर्किट, दैट आईडीपी इज इक्वलेंट टू IDN। दिस इज द कंडीशन कि आईडीपी हमेशा आईडीएन के इक्वल होगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं आईडी के फ्लो होने के लिए। चलो मैं निकाल लेता हूं आईडीपी का वैल्यू बाय अज्यूमिंग पीमॉस इन सेचुरेशन। कितना हो जाएगा, 0.1 मिली एम्पियर इंटू VG। और VG का वैल्यू बड़ा सिंपल, ये 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट 6 वोल्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि यहां जाने वाला करंट कितना है, 0। यहां जाने वाला करंट कितना है, 0। सो आई कैन से दिस पोटेंशियल इज 6 वोल्ट। तो VG का वैल्यू आ गया मेरे पास 6 वोल्ट, माइनस VS का वैल्यू है 12 वोल्ट, है ना। ये VG, ये VS, माइनस VTH का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा +2। दिस वैल्यू इज +2।
Okay, and this much of square VGS minus VT whole square. ये कितना हुआ? You can say IDP is equivalent to 0.1 milliampere. This is minus 6 plus 2, 4, 16. So I can say this is 1.6 milliampere. ID का वैल्यू, IDP का वैल्यू कब आया, कितना आया? It's 1.6 milliampere by assuming PMOS in the saturation. This is the answer by assuming PMOS in saturation. ये आंसर आया है by assuming PMOS in the saturation. Now what I can say, I am interested in IDN. IDN can be written as, okay, 0.1 milliampere per volt square into VGS. So what is VG? In this case VG is 0. 0 minus minus 5 is 5. 5 minus 2. Whole square, which come out to be 0.9 milliampere. तो ये तो गड़बड़ हो गया, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू. एक करंट आ रहा है सेचुरेशन का 1. अब देख लेते हैं कि एनमॉस सेचुरेशन में है या नहीं है. VGS शुड बी ग्रेटर देन VTH. VG का वैल्यू कितना? 0. इसका वैल्यू कितना? VS का -5. दिस शुड बी ग्रेटर देन 1. तो 5 इज ग्रेटर देन 1, मतलब एनमॉस कहाँ है? सेचुरेशन में है. अब PMOS सेचुरेशन में है या नहीं है, जरा उसको भी देख लेते हैं. VGS शुड बी लेस देन, ओके, ये सेचुरेशन में तो है, दोनों ऑन तो है. सेचुरेशन के लिए पता करना है मुझे, तो कैसे, क्या कंडीशन है? द कंडीशन इज, फॉर फर्स्ट ट्रांजिस्टर व्हाट इज द कंडीशन? VDS should be greater than or equal to VGS minus of VT. S and S cancel. VD should be greater than or equal to VG, which is 0 minus 1. What I can say, the transistor cannot have current more than its saturation current, है ना. ये मैक्सिमम करंट ट्रांजिस्टर में कब फ्लो होता है? व्हेन ट्रांजिस्टर इज इन सेचुरेशन. मतलब अगर इन दोनों ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो 0.9 मिली एम्पियर से ज्यादा ये हैंडल नहीं कर सकते. इसका मतलब इसमें अगर ये 1.6 मिली एम्पियर हैंडल कर रहा है, इसका मतलब क्या बोलना पड़ेगा कि ठीक है ये 1.6 एम्पियर देगा, लेकिन ये ले ही नहीं सकता. इसकी कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम 0.9 मिली एम्पियर. मतलब ये जो कैलकुलेशन है गलत है. कहाँ होना चाहिए? योर फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज इन ट्रायोड रीजन एंड सेकंड ट्रांजिस्टर इज इन सेचुरेशन रीजन, ताकि ट्रायोड में इसका करंट थोड़ा कम हो जाएगा और 0.9 आ जाएगा. तो ये 0.9 किसके बराबर है? दूसरे के सेचुरेशन के इक्वल है. तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस ट्रांजिस्टर? दैट फर्स्ट ट्रांजिस्टर विच इज PMOS is in triode and second one is NMOS, and NMOS is in saturation condition. So this is the idea for the क्वेश्चन कि इस टाइप क्वेश्चन जब आपके पास VD अननोन है तो आप कैसे पता लगाएंगे. तो आप देखें कि मैक्सिमम करंट कहाँ फ्लो होता है? व्हेन योर ट्रांजिस्टर इज इन
सेचुरेशन रीजन, तो इसका सेचुरेशन 0.9 है, इसका सेचुरेशन 1.6 है, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 0.9 से ज्यादा नहीं हो सकता, और दोनों ऑन तो है। तो दूसरा ट्रांजिस्टर अगर मैं बोलता हूं कि दिस स्टेज इन सेचुरेशन रीजन, तो ये कहाँ होगा, ये होगा ट्रायोड रीजन में। दोनों के चैनल तो बन गए हैं, तो फर्स्ट वन इन ट्रायोड एंड सेकेंड वन इज इन saturation region. So this is the answer for the question. Now let's take one more problem, and the problem is given like this. The problem is given like this. Again, this is previous year gate. It is given that VTN equal to 1 volt. VTN का वैल्यू कितना है, 1 वोल्ट है, और म्यू एन इंटू COX का वैल्यू कितना दिया है, म्यू एन इंटू COX इंटू W by L equal to 1 milliampere per volt square, and they are asking for ID. What is the value of ID in this circuit? ID का वैल्यू कितना होगा इस सर्किट के लिए, ये क्वेश्चन है, and question is given like this. What I can say, ज्यादा हो गया है। Okay, it is 8 volt. Okay, next is this is 3 mega ohm and this is 5 mega ohm. This is connected to ground. और क्या दिया है, this is 3 mega ohm, this is 5 mega ohm, and this is 1 kilo ohm, and this is 1 kilo ohm. So what they are asking the drain current, कि इसका drain current का वैल्यू कितना होगा।
Okay. So can I say the potential drop here is 3 वोल्ट है ना। 8 वोल्ट में से 3 वोल्ट इसको मिल जाएगा और यहाँ कितना मिल जाएगा 5 वोल्ट। ये तो बड़ी आसान सी बात है कि 8 को 3 और 5 में कैसे डिवाइड करोगे, तो जो 5 है उसको 5 मिल जाएगा, 3 को 3 मिल जाएगा, यहाँ तो कोई करंट जाता नहीं है, तो सिंपल पोटेंशियल डिवाइडर। तो टोटल अप्लाई किया था 8 वोल्ट, 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ, तो यू कैन से द हियर पोटेंशियल इज इक्वल टू 5 वोल्ट। करेक्ट है। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ Vg फॉर द सर्किट इज 5 वोल्ट। सर्किट में Vg का वैल्यू आया 5 वोल्ट। नाउ let's apply the let's assume that our transistor is working in saturation region। तो ट्रांजिस्टर अगर saturation में वर्क करेगा तो उसकी कंडीशन क्या क्या है? NMOS in saturation what is the condition for NMOS in saturation? The condition is VGS should be greater than VTH। फर्स्ट कंडीशन चैनल ऑन करने का कंडीशन है, एंड सेकेंड कंडीशन इज VDS should be greater than or equal to VGS minus of VTH। चलो VG का वैल्यू कितना है? यू कैन से VG इज इक्वल टू 5 माइनस VDS का वैल्यू कितना है? यहां अगर करंट फ्लो होगा तो IDS 5 minus IDS should be greater than 1। IDS minus 5 should be less than or equal to -1। तो IDS का वैल्यू कितना होना चाहिए? लेस देन द वैल्यू ऑफ IDS should be less than 4 milliampere। तब बनेगी बात। आगे क्या? VDS, so you can say the next condition is VD should be greater than VG minus VTH। VD कितना है? VD है 8 माइनस IDS। अरे यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? ID होगा ना, तो ये पोटेंशियल कितना होगा? 8 माइनस IDS शुड बी ग्रेटर देन VG 5 माइनस 1 4। या मैं ऐसा बोलूं ID माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन -1, है ना। या मैं ऐसा बोलूं लेस देन -1, या मैं ऐसा बोलूं ID शुड बी लेस देन 7। तो ID अगर एक में IDS का वैल्यू 7 मिली एम्पियर से कम हुआ और 4 मिली एम्पियर से भी कम हुआ फाइनली, तो दिस ट्रांजिस्टर इज विल वर्क इन द सैचुरेशन रीजन। चलो देखते हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट यही हो गया ना, इट शुड बी लेस देन 4 मिली एम्पियर। दिस इज ऑल्सो इन मिली एम्पियर। चलो कैलकुलेट करते हैं। IDS is equivalent to 1/2 into 1 milliampere into VG, which is 5 minus VG minus VS minus 1. This is whole square. So you can say VGS minus VT whole square, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? You can say this value will be IDS equal to 2 IDS equal to
4 minus IDS whole square. So 2 times of IDS equal to 16 plus IDS whole square minus 8 IDS, which come out to be IDS whole square minus 10 times of IDS plus 16, or what we can say, 8 to the this is IDS square minus 8 IDS minus 2 IDS plus 16 equal to 0. So you can say two factors are IDS minus 8 and IDS minus 2 is equivalent to 0. So two possible cases are IDS equal to 8 milliampere and IDS equal to 2 milliampere. Which one is correct option? So I would say the correct option is 2 milliampere, क्योंकि IDS का वैल्यू 4 milliampere से कम होगा तभी चैनल फॉर्म होगा. अगर ये तो IDS का वैल्यू 4 milliampere से ज्यादा है तो what should I say कि ये कहाँ ले जाएगा? This is the cut off mode. ये करंट impossible करंट है. Our observation for the circuit is what? That IDS equal to 8 milliampere is impossible current. Because it brings the transistor into the cutoff region, है ना? ये impossible current है, ये नहीं मिल सकता आपको. So this is how we can analyze the transistor. Now next, in next class we will start for small signal analysis. We will go for small signal analysis. Small signal analysis. So we will draw some hybrid pi model, small signal model. The first model we will study is hybrid pi. Hybrid pi model. Second model is T model. And we'll study the voltage gain, है ना? We'll study the small signal parameters. Small signal parameters for the circuit. So our discussion will start from this point that in MOSFET, what if one small signal AC is connected to DC? Let's say this is V, no, this is capital V, which is DC, and this is small v. Then what will happen to the current?
यहाँ से we will try to perform a separation between AC quantities and DC quantities, and then we will talk about the small signal analysis. तो कल हम बात करेंगे, there are three possible amplifiers for the circuit, which are the common source, है ना, this is amplifier, and two small signal circuits are common drain and common gate. So we will perform analysis on these three small signal configuration. Then we will talk about the MOS circuit, है ना, cascode, है ना, why cascoding is required. Cascode in case of MOS. And we will see some examples of current mirror. So thank you very much.